A very warm welcome to all of you. Today we are there to discuss a panel discussion on Pocso Act, and we have with us two experts. One is Advocate Rakesh Sharma ji. He is practicing in Delhi Supreme Court, Delhi High Court, and all other courts of Delhi. And he is media in charge of Bar Council of Delhi. Very warm welcome, Sharma ji. Thank you for Thank taking out time. And we have Rupa Pillai. She's a psychologist working in school, and she's a core member of Break Silence, which is a citizens initiative for CSA survivors. Thank you so much, Rupa, for joining us. A very warm welcome to you. Thank you. So हम Thank शुरू you, करते ma'am. हैं शर्मा जी आपसे। हम जानना जी। चाहेंगे कि पोक्सो एक्ट है क्या? Pocso Act means protection of children from sexual offences. It's called Pocso in short. It is was enacted in 2012. It was formulated to effectively address the heinous crimes of sexual abuse and sexual exploitation of children, whether it is male or female, it doesn't matter. And it was introduced to provide for the protection of children from the offense of sexual assault as well as sexual harassment, etc. Thank There you. is Thank you so not much. necessary of sexual assault. Sexual exploitation is also. Sexual harassment is also comes under the act. थैंक यू सो मच शर्मा जी, इतना आसानी के साथ इतनी मुश्किल डेफिनेशन को डिफाइन करने के लिए। और मैं अपने यूजर से जानना चाहूंगी, पार्टिसिपेंट से जानना चाहूंगी, हैव दे एवर हर्ड ऑफ दिस एक्ट बिफोर कमिंग टू दिस प्लेटफॉर्म? वर दे अवेयर ऑफ दिस एक्ट? इन बिटवीन जब तक आपके जवाब आते हैं, मैं रूपा पिल्ले से जानना चाहूंगी कि क्या स्कूलों में अवेयरनेस है इस एक्ट के बारे में? Ma'am, good evening. Like I said before, so talking about sexual abuse or talking about any kind of assault or any kind of mistreatment is not a very old thing in the schools. It has started only after, I would say, 2012-13. That schools have started introducing whole module on, personal safety and health and wellness. So they, during those sessions, the counselors or the health and wellness teachers, they take sessions on personal safety, talk about abuse, and then in a basic manner, they talk about Pocso. So I mentioned before, the younger ones, let's say class 3, 4, 5, they do not really understand the nitty-gritty of it. But they are also made to understand that, no, you can be safe. Nobody can, harm you or hurt you if you come and report this to us. And the elder one, of course, they are told that you surely need to report this. Only then the perpetrator can be punished. Okay. So, thank you. तो शर्मा जी, किस तरह का सजा का प्रावधान है इस एक्ट के तहत? जी, देखिए, सबसे पहले आता है पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट, वेयर a person commit penetrative sexual assault on a child below 16 years, or the person may be he or she, the child, उसमें मिनिमम 10 years का इम्प्रिजमेंट होता है, जो लाइफ तक हो सकता है, विद फाइन। फाइन भी होता है जो कंपनसेशन के तौर पे विक्टिम को दिया जाता है। ओके। नंबर 2, एक होता है एग्रीवेटेड सेक्सुअल असॉल्ट। एग्रीवेटेड सेक्सुअल असॉल्ट में बहुत उसको वाइड स्कोप दिया गया है। मैं उसको छोटे से शब्दों में कहूँ कि जैसे कोई पुलिस ऑफिसर है, वो अपनी प्रमाइसिस में, पुलिस स्टेशन में, या जहां वो रह रहा है वहां पर, या वो किसी का इंटरोगेशन करने गया, वहां उसने किसी चाइल्ड के साथ कोई गड़बड़ किया, या कोई आर्म फोर्सेस का आदमी है, उसने चाइल्ड के साथ कोई चाइल्ड में सेक्सुअल अब्यूज किया किसी भी रूप में, चाहे वो उसकी जहां तक उसका एरिया आता है उसमें हो, चाहे वो उसके हेडक्वार्टर में हो, चाहे उसके रेजिडेंस में हो, या वो उसको पता हो बच्चे को ये फोर्स में है, ये पुलिस मैन है, ये आर्म फोर्स का आदमी है, वो अगर होता है तो वो एग्रीवेटेड पेनिट्रेशन में आता है, असॉल्ट में। उसी के अलावा जैसे हॉस्पिटल्स, वहाँ अथॉरिटी है, बच्चा आप इलाज के लिए आप लेके गए, वहां उसके साथ डॉक्टर्स या कोई वहाँ का स्टाफ या कोई भी आदमी जो हॉस्पिटल के मैनेजमेंट से है, जो सर्वेंट है वहाँ, वो करता है, दैट इज कॉल्ड एग्रीवेटेड। या इसी तरह स्कूल, कॉलेज, वहाँ के कॉलेज का कोई टीचर या कोई भी
या जो भी एम्प्लॉय, अथॉरिटी फिगर्स है जो मतलब। भी अथॉरिटी है। इसी तरह जो प्राइवेट इंस्टीट्यूट हैं, भले ही वो सरकारी हो, प्राइवेट इंस्टीट्यूट कुछ अपने में है, कुछ सरकारी इंस्टीट्यूट में है, वहाँ का जो मैनेजमेंट है, उस मैनेजमेंट से जुड़े हुए किसी भी आदमी के द्वारा कोई भी ऐसा सेक्सुअल असॉल्ट किया गया तो वो एग्रेवेटेड सेक्सुअल असॉल्ट में आता है, और उसमें 20 साल की मिनिमम सजा है, जो ओके लाइफ तक जा सकती है। और लाइफ तक जाने का मतलब लाइफ मीन उसकी नेचुरल डेथ इन द जेल। ओके ओके इट्स नॉट लाइक कि 20 साल के बाद लाइफ 25 साल बाद उसको रिलीज कर दे, देयर इज नो रिलैक्सेशन इन पॉक्सो केस। और फाइन भी है, वो फाइन भी कंपनसेशन के तौर पे विक्टिम को दिया जाता है। ये इसमें सजा का प्रावधान। शुक्रिया इसके अलावा एक और है, सिंपली सेक्सुअल असॉल्ट। सेक्सुअल असॉल्ट मींस आप किसी बच्चे को इम्प्रॉपर वे में छूना, उसको कपड़े उतार देना, या उसको इम्प्रॉपर वे में सेक्सुअल इंटेंशन के साथ चूमना, या उसके प्राइवेट पार्ट्स को छेड़ना, या लड़की है तो उसके ब्रेस्ट को हाथ लगाना, या उसके कपड़े उतार देना, उसको नेक पेड करा देना, इसमें सजा 5 साल। और इसके अलावा और भी इसके जो बीच में क्लासेस की गई हैं वो भी की गई हैं। उसमें इवन इतना है कि उसको स्टॉकिंग करना, जैसे 354 में है, उसको वॉच करना, उसकी एक्टिविटीज को रेगुलर वॉच करना विद द इंटेंशन टू सेक्सुअली एक्सप्लॉइट देम, या उस बच्चे को बिलो द एज ऑफ 18 उसको कोई पोर्नोग्राफी दिखाना, उसको कोई जिसे आप लोग हिंदी भाषा में मान सकते हैं ब्लू फिल्म्स दिखाना, या कोई न्यूड पिक्चर्स दिखाना, या ऐसा लिटरेचर उसके सामने रखना जो उस दायरे में आता हो, जिसमें वन कंफर्टेबल हो, या कोई भी इम्प्रॉपर टच करना, ये सब सेक्सुअल असॉल्ट पे आता है। इसका प्रोविजन, इनकी सजाओं का प्रोविजन पॉक्सो एक्ट में बखूबी किया गया। अच्छा शर्मा जी, ये बताइए क्या इसमें साइबर क्राइम या साइबर बुलिंग के केसेस भी रजिस्टर्ड हो सकते हैं? पॉक्सो क्या है जी, अगर अगर वो ऑनलाइन कोई क्राइम हुआ? जी ऑनलाइन, आजकल ऑनलाइन का ही सिस्टम चल गया है। टू सेंड द वल्गर मैसेजेस, टू सेंड द सेक्सुअल मैसेजेस, टेक्स्ट, एसएमएस, एमएमएस, ये भी उसी में आता जी जी, थैंक यू। अच्छा रूपा जी, आप ये बताइए, मैंने अभी चैट में पढ़ा कि कुछ लोग जीडी गोयनका से कनेक्टेड हैं, तो उन्होंने कहा कि हमारे स्कूल में पॉक्सो कमेटी है एंड वी आर वर्किंग टुवर्ड्स अ सेफ एनवायरनमेंट फॉर चिल्ड्रन एट स्कूल। डू सच कमिटीज एग्जिस्ट इन एवरी स्कूल और योर स्कूल? Ma'am, I can't really comment on every school. Like in our school, we have here in Delhi, FO school, we have something called Internal Complaint Committee, which Okay. also takes care of all these harassment cases or anything related to sexual abuse. Okay. it. It is And mandatory. It is mandatory It for is all. mandatory. It is Yes, not only for school. It is for all institutes, all establishments institutions. where the employees are more than 20. It's hmm. mandatory for all private, government, all. Yes. यस, मैंने स्कूल पर्टिकुलरली इसलिए कहा क्योंकि लगभग 18 साल से कम के जो बच्चे होते हैं, दे आर मोस्टली स्टडिंग इन वन और द अदर स्कूल, so role of schools and the school psychologist is very crucial and very important, right? So apart from having such committees or complaint committees, what efforts the school takes to familiarize children that touching you in an appropriate way? Ma'am, what we do is here in Delhi, in our school and the previous schools that I've worked in Hyderabad and other places, we always, every week we have a personal safety class for classes ranging from class 1 to 10. And then for the primary ones, they have their own personal safety classes. Now, the content for each class, of course, is different. And these personal safety classes, they don't stop at one session or anything. We continue, like, let's say after every 3 months, we repeat so that, it is kind of ingrained in the children. And at the same time, we conduct session with parents to educate them. So that if anything, the child is showing any kind of sign or anything, the parent can report to us, or we notice anything, we can talk to the parent. So this is an ongoing process. It goes on, I would say, 6 times at least in a year. Okay, thank you. Thank you so much, Rupa. Sharma ji, I would like to ask you, what is the process to file a complaint against this act? Suppose somebody has suffered. Okay.
इसमें क्या है कि अगर बच्चा इतना छोटा है, सपोज 8 साल का है, 7 साल का है, 6 साल का है, वो खुद अपनी बात किसी भी सेकंड पर्सन को अदर देन मदर और फादर और गार्जियन के अलावा नहीं कह सकता, तो उसके ब्याह पे उसके जो गार्जियन है, उसकी जो मदर है, फादर है, बड़ा भाई है, बड़ी बहन है, जो भी कस्टडी में जिनके है, वो उस बच्चे को साथ ले जा करके किसी भी पुलिस स्टेशन में या जो लाइन जो यूनिट्स हैं, जो बनी है स्पेशल यूनिट्स हैं, उनमें अपनी रिपोर्ट वर्बली भी बता सकता है, लिखकर भी दे सकता है। अगर वो वर्बली बताता है तो उस पुलिस ऑफिसर की या उसको भी उस ऑफिसर की जो स्पेशली डिप्यूटेड है, उसकी ड्यूटी है उसको वो राइटिंग में नोट करेगा, राइटिंग में लाएगा और राइटिंग में उसको पढ़कर सुनाएगा। सेटिस्फैक्ट्री जब तक नहीं होगा तब तक उसको वो लिखेगा, तो पूरा कंटेंट लिखने के बाद उनको पढ़कर सुनाएगा। एक बात इसमें प्रॉब्लम आती है, सपोज बच्चा दिल्ली का है या यूपी का है या हरियाणा का, वो किसी काम से चेन्नई गया, उसकी फैमिली गई या शादी में गया, वहां उसके साथ कुछ गड़बड़ हुआ, इस तरह का सेक्सुअल असॉल्ट हुआ, या अब वो वहां के पुलिस स्टेशन में जाते हैं, दे डोंट नो द हिंदी, दे डोंट नो द इंग्लिश समटाइम, तो ये ड्यूटी है गवर्नमेंट की तरफ से, मैंडेटरी है कि वहां का जो पुलिस इंचार्ज होगा, जो भी वो रिपोर्ट लिखने वाला आदमी, वो एक ट्रांसलेटर की फैसिलिटी उसको प्रोवाइड कराएगा और उसकी कॉस्ट डिपार्टमेंट देगा, यानी पुलिस देगी, वहां की अथॉरिटी देगी, वो बच्चे के ऊपर नहीं होगा कुछ। तो वो एक मैंडेटरी है, उसके लिए जरूरी, इस तरह से उसकी रिपोर्ट की जा सकती है। दूसरी बात, उसकी जब रिपोर्ट हो जाएगी तो उसको मैंडेटरी है कि उससे जो भी कुछ पूछताछ होगी, जो भी उसका बयान लिखा जाएगा, वो उसको पुलिस स्टेशन में नहीं बुलाया जाए, उसको या तो जो पुलिस ऑफिसर है नॉट बिलो द रैंक ऑफ सब इंस्पेक्टर, वो उसके घर जाएगा, या और वो भी लेडी, नॉट मेल मेल, अगर वो लेडी विक्टिम है तो लेडी जाएगी, जेंट्स जो है वो कभी भी दूसरा जेंट्स मेल ऑफिसर जा सकता है, बट इन केस ऑफ फीमेल गर्ल चाइल्ड, उसमें फीमेल ही जाएगी, लेडीज इंस्पेक्टर, प्लस वो कभी भी यूनिफॉर्म में नहीं जाएगी, विदाउट यूनिफॉर्म जाएगी, या तो उसके घर जाएगी या उसके बताए हुए किसी ऐसे प्लेस पे जहां वो कंफर्टेबल महसूस करे, या ऐसी जगह पे जो कॉमन प्लेस हो जहां वो बच्ची या उसके गार्जियन कंफर्टेबल, ऐसी जगह जा करके उसको रिकॉर्ड करेगा, उसकी स्टेटमेंट को, कि जो फर्दर बयान है, जो भी स्टेटमेंट है उनको बयान करेगा, और उसको आइडेंटिटी उसकी जो है वो किसी भी सूरत में कहीं बाहर डिस्क्लोज नहीं करे। इट इज रूल, इट इज लॉ। ऐसा नहीं है कि उसका नाम वो सब जगह बता देगा, कि विक्टिम का नाम कहीं भी नहीं बता सकता चाइल्ड। तो ये इसका प्रोसीजर है कि आप रिपोर्ट करा सकते हैं, आप इवन टेलीफोन पर भी दे सकते हैं कि ऐसा हो रहा है या होने का अंदेशा भी है, तो भी पुलिस ऑफिसर विल रीच एट योर होम, एट योर एड्रेस, वेयर एवर यू आर स्टेइंग और रिजाइडिंग, देन वो आपकी रिपोर्ट। Okay. So thank you, and that's a good thing कि police officer will not go in the uniform. So that यस will not create a stigma in the society as well as the parents of the children, right? यस यस And it's good that if a girl child is suffering, then mandatory the male officer will फीमेल, not be there, right? यस। So Rupa, I want to ask you कि if some case is reported, what protocol is followed in school setups? Ma'am, first and foremost is if if an incident is reported in the school on a child by somebody from the same school, then there is a different protocol. Or if the child reports an abuse, an incident which has happened by the perpetrator who is outside the school, then there's a different protocol. Now, I would like to just clarify from Sharma is third party reporting still mandatory in Pocso? No, not Because mandatory. non-mandatory, because when Pocso started in 2012, third party reporting was mandatory. So then what would happen? We had a case and I was in Hyderabad, and it was a severe case of the child being molested every single day by the Molavi. And so I thought that it was my duty to report it to police. The school management totally stopped me. They said, no, we can't make it public. And it is now with the parents whether they want to make it public or not.
So first step is we inform the management that this has happened by somebody from the school when it is the staff, any staff or any child. मैडम So इसमें मैडम इसमें मैडम मैडम इसमें इसमें आप थर्ड पार्टी की आप स्कूल में भी रिपोर्ट कर सकते हैं, आप सीधा पुलिस में भी कर सकते हैं। और अगर exactly. आपने स्कूल मैनेजमेंट को रिपोर्ट किया, प्रिंसिपल को किया या मैनेजर को किया या ऑनर को किया, तो उसकी ड्यूटी है विद इन 24 आवर्स he or she should report to the matter to the police concern police station. Yes. Now Otherwise he or she will be guilty. Yes, for So 6 he will months, become I the think accused. imprisoned. Yes. Yes. However, many No, cases, no. Yes, yes. however, many cases I've seen management, they don't really want to report it because they say now it's up to the parents what they want to do. I have removed the staff from my school. So first the teacher reports it to the management. Management talks, calls the child only in presence of the counselor. The counselor talks to the child. The child is made to feel comfortable. If the child says, yes, this has happened with me and this is the person and the person is of somebody from staff, the staff is not even questioned, nothing, which is right. The staff is immediately removed. My question is, the staff, instead of just being removed, should also be handed over Yes, to yes, police, yes. isn't it? Just to removal from the school or from the payroll is not the punishment of sexual assault. Exactly, exactly. Because that the report should be done to the police station and police will make him accused. And yes. it is simply if a girl child first report to the principal or to the teacher or to the parent of some other colleague, her classmate, schoolmate, whatsoever. If she has some friend or he has some friend, he tell her friend or his friend that it has been happened with me. And that child, that boy, that friend reported this matter to his parents. Then they can also make a complaint to the police. Yes. And they can complain to the principal. If principal doesn't report the matter immediately to the police, then the principal or the manager or the management officer will become the accused. Will become the accused and face the consequences. I have at present I have बहुत मुश्किल से एक बच्चा हिम्मत करता है कहीं भी अपने आप को एक्सप्रेस करने की. उसने एक जगह एक्सप्रेस कर दिया, then it lies the responsibility of that person to at least convey it further. At least they must. It is must for him to report the matter to the concerned police station where the report has been done by the child. Ma'am, some years back, not like long years back, some couple of years back, one principal from KV Hebbal, he was charged under Pocso. So what happened is he was simply posted to another district. Oh. Nothing happened. Okay. So finally it became like, since it was Karnataka and it became an uproar. Finally, the district commissioner, he jumped in and he finally, made that person go out of service. So no, in most it depends. देखिए, जब तक आपके ऊपर जो चार्जेस है प्रूफ नहीं हो जाते, you are innocent. You are deemed to be innocent. सिर्फ चार्जेस लग जाने से किसी को सजा दे देना ये कानून नहीं कहता. उन्होंने सर्विस से निकाला, ये उनका अपना रूल है. नहीं भी निकाला, ये उनका अपना रूल. But for the fair investigation, it is enough that they have transferred that principal to another school so that he or she cannot may not influence the victim or influence the witness. It is up to the department. But as per law. Sir, that time investigation was not ongoing. He was just transferred. There was a Pocso case. He was just transferred. They did not report the case. They simply transferred as a punishment without reporting the matter to the authorities, right? Well, yes. Legal authorities. And later when parents, made an uproar, only then it was, it became a case and investigation started going on. इससे कोई फर्क नहीं पड़ता. वो बाद में पुलिस उसको एक्यूज बना देते हैं. कोई फर्क नहीं पड़ता. Okay. ये तो ऐसा हुआ कि आप किसी आदमी ने कोई जुर्म किया और वो वहां से भाग गया या भगा दिया गया. तो उसका मतलब ये नहीं कि मैटर रिपोर्ट होने के बाद पुलिस उसको कैच करेगी, पुलिस उसको अरेस्ट करेगी. Now, ma'am, like you asked, if it is some, what happens in school. Now, let's say the child has reported an abuse
and the perpetrator is somebody not from school, not related to school. So our first aim is to tell the child that I'm going to discuss this with your parents, because as a counselor, we need to tell the child that whatever you tell me, it's between you and I. So first thing is that I'm going to discuss this with your parents for your safety purpose, and then inform the parents, call them to the school and talk to them in front of principal, vice principal, whosoever. Next course of action is, if the parents say, no, it's okay, we will take it forward from here. You don't even have to counsel the child, we'll take her to another person. We leave it there, but the counselor in school present would also in between talk to the child that how are you now? Are you feeling okay? And if the parents say, no, you take care of it, and we don't know what to do, then the school will have to step in, not, reporting the person to police or anything, but taking care of the child's mental health and safety of the child. Of course, we cannot say that you have to separate the child from the perpetrator. That is totally the parents' prerogative, what they do or how they do it. नहीं मैडम, इसमें ऐसा है, मैं आपको बताता हूँ, इसको आप बहुत स्मॉल और शॉर्ट में समझ। इफ किसी बच्चे ने प्रिंसिपल को या टीचर को अपने बारे में बताया कि मेरे साथ गड़बड़ हुआ है, मेरे साथ गलत हुआ, प्रिंसिपल या टीचर ने उसके पेरेंट्स को बुला लिया, उसके पेरेंट्स स्कूल में आ गए, मैटर वर डिस्कस। नाउ आइदर तो उसके पेरेंट्स ये कहते हैं सर आप रहने दीजिए, हम कंप्लेंट कर, राइट, और पेरेंट्स कंप्लेंट कर देते हैं, तो प्रिंसिपल की ड्यूटी खत्म हो जाती है। अगर पेरेंट्स नहीं करते, वो कहते हैं मैडम आप ही करिए, और मैडम भी नहीं करती हैं, तो मैडम विल बी एक्यूज, मैडम विल बी रिस्पॉन्सिबल। एक बात। Okay. दूसरी So बात, parents' consent will be the highest most consent. अगर पेरेंट्स से कहते हैं कि हम ही कंप्लेंट करेंगे, आप नहीं करिए, तो दूसरा कैसे करें? या चिल्ड्रन कहती मैं खुद जाके करूंगी, चिल्ड्रन इज मान लो 15 इयर्स ऑफ एज, 16 इयर्स ऑफ एज, वो कहते मैं जाके खुद करूँ, करते, उसमें पेरेंट्स की भी जरूरत नहीं। हाँ, उसके साथ कुछ कंडीशंस हैं बाद में, सपोज उसने, बच्चे ने जो है कंप्लेंट कर दिया, इन्वेस्टिगेशन शुरू हो गया, उससे सबसे पहले उसका मेडिकल एग्जामिनेशन होता है बच्चे का। मेडिकल एग्जामिनेशन में कंपलसरी है, बाय लॉ मस्ट है कि अगर फीमेल चाइल्ड है तो उसका जो मेडिकल होगा वो लेडी डॉक्टर के द्वारा ही, लेडी डॉक्टर ही उसका मेडिकल चेकअप करेगी। एक बात, लेडी डॉक्टर जो मेडिकल चेकअप करेगी इन द प्रेजेंस ऑफ द मदर और द सिस्टर, एनी लेडी रिलेटिव ऑफ दैट विक्टिम इन केस ऑफ फीमेल चाइल्ड। और अगर पेरेंट्स नहीं है, रिलेटिव्स कोई नहीं है, बच्चा अकेला है, तो जिस हॉस्पिटल में वो एग्जामिनेशन हो रहा है, वहां का सीएमओ या इंचार्ज कोई भी एक लेडी को डिप्यूट करेगा अपनी तरफ से, जिसकी प्रेजेंस में लेडी डॉक्टर उसका मेडिकल एग्जामिनेशन करे। इट इज एज पर रूल, एज पर लॉ, इट इज मैंडेट, ये जरूरी। और उसके साथ उसका कहीं नाम रिवेल ना हो, ये प्रिकॉशंस रखी जाए एट एवरी स्टेज। अच्छा शर्मा जी, होता क्या है कि ऐसे केसेस अक्सर बहुत लेट रिपोर्ट होते हैं, उसका रीजन, उसका रीजन उस केस में As मेडिकल per- एग्जामिनेशन कैसे पॉसिबल है? यस, नॉट नहीं, मेडिकल एग्जामिनेशन करंट की पोजीशन शो नहीं करेगा, बट वो ये बता पाएगा कि वेदर इट वाज अ पेनिट्रेटिव असॉल्ट और नॉट। सो इफ इट इज नॉट अ पेनिट्रेटिव असॉल्ट, उस केस में सपोज कोई किसी को किस कर रहा है, हक कर रहा है, वो उसकी सजा उस तरह की चीजें मेडिकल एग्जामिनेशन में आना, यस, उस मेडिकल में नहीं आएगा, लेकिन उसमें एविडेंसेस देखे जाएंगे, कलेक्ट किए जाएंगे, कंप्लेनेंट की से पूछताछ की जाएगी, जिस ढंग से भी वो बताएगी, उसको एग्जामिन जज करेंगे, ऐसा नहीं है। तो उसके बाद उसमें सजा का प्रावधान है, जो बहुत माइनर, उसमें 3 साल तक की सजा है, उसके बाद 5 साल तक की है, उसके बाद अगर वो दूसरी अथॉरिटी के थ्रू किया गया तो 7 साल तक। ऐसे केसेस में भी सजा है। मेन चीज ये है कि जैसा मेरा अपना एक्सपीरियंस रहा काफी दिनों से, मैं पॉक्सो की बहुत सारे केस कर रहा हूँ, जितना स्टडी मैं कर पाया हूँ, तो मुझे लगता है मोर देन 70% केसेस और मे बी 75% केसेस जो पॉक्सो के अंडर में होते हैं, पॉक्सो एक्ट में कवर होते हैं, वो आइदर तो फैमिली मेंबर के द्वारा कमिट किए जाते हैं इस तरह के ऑफेंसेस, आइदर तो सम ट्रस्टवर्दी पर्सन के थ्रू किए जाते हैं। सपोज मम्मी पापा और घर में 4 लोग हैं, 5 लोग हैं, उनसे नहीं हुआ तो कोई मामा है, कोई मैटरनल अंकल है, कोई मैटरनल ब्रदर है, कोई
कजन है, कोई इवन यहाँ तक ग्रैंडफादर भी हैं कईयों के तो, या मैटरनल ग्रैंडफादर हैं, ऐसे भी केसेस आए, या और डिस्टेंस रिलेटिव्स हैं। एक कैटेगरी ये है। दूसरी कैटेगरी ये है जिनका घर में फ्रीक्वेंट आना जाना, जहाँ वो बच्चा खेल रहा है, पड़ोसी आते हैं जाते हैं, पेरेंट्स भी लापरवाह होते हैं कि हमारी बच्ची तो 7 साल की है, 6 साल की है, तो उसके साथ कोई क्या है, सोच भी नहीं पाते, और उस तरह का असल्ट होता है। तीसरी कैटेगरी स्कूल्स में आती है, जहाँ स्कूल का कैब ड्राइवर है, स्कूल का चौकीदार है, कहीं कहीं टीचर हैं, या कोई और स्टाफ है, उनके थ्रू भी ऐसा किया गया, ऐसा रिपोर्ट होता है। जी, मेन चीज मतलब बताने कोई का ना कोई मकसद ये नोन है, इंसान होगा, कोई नोन ना कोई नोन 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 इंसान होगा, नोन कोई ना नोन कोई नोन ट्रस्टवर्दी इंसान होगा, और वो यस। एक दिन में नहीं होगा। इंसान धीरे-धीरे करके अपना टाइम लेता है। एंड अननोन में फिर वो ब्रिटल की तरफ चला जाता है। सपोज एक हुँ, बच्चा बाहर पार्क में खेल रहा है, उसको कोई नशेड़ी या हुँ, कोई कोई लस्टी, कोई इस तरह का दिमागी बददिमाग आदमी मिल गया, और वो उस बच्चे को ले जाता है, तो ज्यादातर केसेस में या तो उसका मर्डर कर देता है बाद में, या वो फिर फ्लीड हो जाता है, उसको इंजर्ड करके भाग जाता है। इस तरह के केसेस बड़े कम होते हैं। हुँ, ज्यादातर केसेस में नोन नोन होता है, नोन, इसलिए नोन, यस, इसलिए स्टिग्मा होता है बच्चे के दिमाग में कि ये तो मेरे चाचा है, हाउ आई कैन रिपोर्ट। वो अपनी मम्मी को भी करते, तो मम्मी कहती नहीं बेटा, तुम्हें गलत फहमी हुई होगी, ऐसा नहीं हो सकता, ये तो बहुत अच्छे मामा है, ये तो बहुत अच्छे चाचा है, ये तो बहुत अच्छे ताऊ जी है। तो वो जो एक फैमिली प्रिस्क्रिप्शन है, वो उसको साइलेंट कर देता है, फिर वो रिपीट होता है, और जी, जो जो ऑफेंडर होता है वो साइलेंस का मिसयूज करता है। फिर वो जी। सोचता है कि ये डर गए हैं, मेरे को यहाँ तक मैं बढ़ा हूँ, 10 कदम आगे बढ़ा हूँ तो किसी ने कुछ नहीं कहा, बच्चा भी साइलेंट है, तो वो 11, 12, 15 कदम बढ़ता है, और अल्टीमेटली वो कर बैठता है जो नहीं होना चाहिए। जी। तो ये एक सोशल स्टिग्मा भी इसे कह लीजिए कि ऐसा इनफैक्ट रहता है। आपकी बात से मुझे ध्यान आया कि लोग फैमिली रेपुटेशन बचाने के लिए कितना करते हैं। मैं आपको 2 यस। चीज़ें सब लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगी। आई वाज़ वर्किंग विद ड्रग्स रिहैब and there was an addict who was admitted in the rehab, and when we talk to them, they share about their life histories. And most of the people into drugs have a traumatic childhood for one or the other reason. So a person shared when I was in 7th class, someone distant relative used to come and stay in our home. He used to whitewash our house. He will come once or twice, once in a 2 years or 3 years time. He will stay there for 10 days. He will do the whitewash and he will leave. But in the night, we sleep in the same room and he will assault me. He will have anal sex with me. This happened more than 15 years ago. Okay. With you? That time, this child had this Okay. experience. Now the child, when I met him, he was more than 20, 25 years old. Close to 30 years, he was in late 20s. This happened when he was in 7th or 8th class. That means 15, 20 years back, this has happened. But this was still traumatic for the person. So he shared with his father that time also. And now when he shared me and he want to have a grudge against his father, he don't listen to me, he don't allow me to make a complaint. So I make them sit face to face, and I asked him, I told the person, even if you have grown, you are 28, 29, 30, that heart is still there. How about telling your father how did you felt at that time? And he said, no, 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 it cannot happen, it cannot happen. He was in such a denial. Second case I'll share. I have a very good, known person to me. She sent her 2 children, boy and the girl, both for therapy. I'm a hypnotherapist. Most people are aware of it. So the children told me that when they were very small, say 4 or 5 years old, their chacha used to assault them. He will allow them to have oral sex. Okay, he will force them to have oral sex. Slowly and steadily, the children collected the courage and informed the this thing mother. Mother informed the father. There was a big quarrel. The chacha was thrown out of the house. The children felt little relieved. Okay. After few weeks, few months, the mother asked the elder son, why don't you bring your younger boy? He's sorry about it. He will not repeat it. The family is at stake. You are getting married. He's getting married. His in-laws will be say this, this, this. And in the name of all those things, they bought him again. And it repeated after that, which continued for more than 10 years. And both the child did not inform their parents the second time. When I asked them,
Why you did not inform them? They said it was useless. We told them once, they bought him again, and my chacha used to tell me, I am more important than you two guys. That's why I'm allowed to do this. And it continues for 10 years. Imagine. So एक बार जब बच्चा हिम्मत करके कहीं भी किसी पे बता दे, उसके बाद अगर उसको सजा नहीं मिलती है सामने वाले को, या उसके बहुत टेकन जो बिल्कुल क्लोज वंस है, फैमिली वाले भी हैं, अगर वो भी उसको चीज को सीरियसली ना ले, उस चीज को डिनाई कर दे, तो शायद बच्चा फिर कभी कहीं नहीं बता पाएगा. Now, Rupa, I want to ask you one thing. Maybe me and you are not law deciders, right? The laws are already in place. But the law say if the crime is less, the punishment will be less, right? But being a psychologist, what do you think? Is there something less and more in terms of mental stigma or mental trauma? If a child is touched inappropriately, even on cheek, Yes. or even on the breast, or even on the lip, it is it as traumatic as having sex? Isn't it? Tell me. Absolutely, ma'am, because it says, all non-touching acts, many non-touching acts also come under child sexual abuse, like exhibitionism, fondling oneself, masturbating in front of the child, just taking off clothes, sending pornographic picture, or talking, obscene stuff. Now, if the law says these are not penetrative or these are not aggravated as, these are not in high level, and so the punishment will be less. But for the child who has undergone this, it's as big as anything, as big as penetrative assault. So there comes, because I will tell you one case, ma'am. मैडम, इंस्टेड ऑफ केसेस एक्चुअली क्या है, मैं आपको बताता हूँ. केसेस की अगर हम बात करेंगे, आई हैव 100 ऑफ केसेस, यू हैव 1000 of course, एंड आई थिंक वी शुड अवेयर द पीपल, स्टार्ट द कैंपेन फॉर अवेयरनेस. एक्चुअली मैं कई स्कूल्स में गया हूँ, बच्चियों के स्कूल में गया स्पेशली, और आप हैरान रह जाएंगे कि अगर वो केसेस हैं जिसमें अगर 70 फीमेल गर्ल चाइल्ड है अगर, तो 30 उसमें बॉय चाइल्ड जिनके साथ ऐसा हो रहा है. रही बात जो जैसा अभी आपने बताया मैम, कि जो फैमिली टाइज है वो इस टाइप का होता है फाउंडेशन, कि वहाँ बहुत सारी चीजों को दरकिनार नहीं किया जाता, और इसलिए बच्चा उसमें अब्यूज उसको साथ होता रहता है. मेरे पास एक केस में, 1 मिनट का केस बताता हूँ. एक बच्ची ने, 17 साल की बच्ची ने रिपोर्ट लिखाई with all evidences that my father is using me or abusing me from last 11 years. When I was in 6th or 7th year, he started abusing me, sexually abusing me, and now he continues. She reported the things to the principal. Principal take it lightly, and then she told the things to her classmate. Her classmate told the things to her mother, and mother told the father. This chain was like that, and ultimately the matter was reported. Her father was arrested and sent to the CRC. But after 6 months or 7 months, her mother start weeping, other relatives start weeping, और उसको समझा रहे हैं, बच्चे हम भूखे मर जाएंगे, तेरा पापा अकेला कमाने वाला था, तेरे छोटे 4 भाई बहन हैं, ये भूखे मर रहे हैं, तेरी मम्मी अब बर्तन मांजने लगी है, नोबडी इज अर्निंग, एंड ये वो करके अल्टीमेटली मुझे पता लगा कि उन्होंने उससे बयान दिला लिया, मेरे साथ ऐसा कुछ हुआ ही नहीं था. देन ही गॉट द पे. तो इस टाइप का जो प्रेशर होता है बच्चे के ऊपर, जैसा अभी आपने बताया कि वो दोबारा उसको अंकल को ले आए और फिर वो रिपीट होता रहा, तो बच्चे के पास कोई एस्केप नहीं होता है बाहर निकलने का. बच्चे को कहीं भरोसा नहीं रहता है. सबसे ज्यादा भरोसा बच्चा अपने माँ पे करता है. माँ सोशल स्टिग्मा की वजह से या पारिवारिक बंधनों की वजह से, बदनामी के डर की वजह से उस बात को पहले तो खुद ही छुपाती है, ज्यादा हुआ अपने हस्बैंड को बताती है, फिर दोनों में डिस्कस होता है, फिर दोनों अपने सोचते हैं. बच्चा परेशान रहता है कि कुछ नहीं कर रहे, और अगर करते भी है तो उनको फिर अदरवाइज वे में दिया जाता है, नहीं नहीं बच्चे गलत फहमी है, मैंने तो ऐसा कुछ नहीं किया. सोसाइटी में, फैमिली प्रेशर्स में स्पेशली बहुत छोटे बच्चों के साथ, नहीं, और रोते हैं तो वो विड्रॉ कर लिए जाते हैं. बहुत छोटे बच्चों के साथ एक और दिक्कत आती है. बहुत किसी एक 30 साल के आदमी ने, कोई अंकल है, कोई भी है, पड़ोसी है, उसने एक 8 साल की बच्ची को चिक्स पे चूम लिया या लिप्स पे चूम लिया.
भले ही उसकी इंटेंशन जो है वो सेक्सुअल रही हो, भले ही उसकी इंटेंशन बैड रही, अगर वो किसी बच्ची रिपोर्ट करती है या बच्चा रिपोर्ट करता है अपने पेरेंट्स से, तो बहुत साफ गोई से और रोब से कहता है, अरे मैंने तो अपना बेटा समझ के, बच्चे के समझ कर इसको रोक कर किया, मैं कोई ऐसा करूंगा, और मेरी रेपो देखो आप, मेरा स्टेटस देखो आप, तो बच्चा चुप रह जाता है। बच्चा क्या करे, जी हाउ हाउ शी और ही विल कलेक्ट द प्रूफ कि नहीं साहब इसकी इंटेंशन मुझे पता थी। और वो जी इंटेंशन के लिए ही एक कैंपेन भी चला था, जस्ट टू डिफरेंशिएट, टू फील द डिफरेंस बिटवीन द गुड टच और बैड टच, स्पेशली फॉर द फीमेल चाइल्ड, के जो गर्ल चाइल्ड हैं उनको आपने टच किया है, वो बैड टच है या गुड टच है, ये काउंसलिंग नहीं, मेरे ख्याल से साइकिल सिर्फ फीमेल चाइल्ड के लिए शर्मा जी, स्कूल्स में जब हम लोग एजुकेट करते हैं में, हाँ या बच्चों फीमेल को चाइल्ड, एजुकेट करते हैं हम लोग सोसाइटी में, कम्युनिटी में, वी जी। टेल बोथ ऑफ देम, either the और boy or the girl or any gender fluid person, that every ऐसे touch which makes you ऐसे भी uncomfortable is ऐसे bad. भी केसेस हैं, ऐसे भी केसेस हैं And in fact कि good touch bad touch भी नहीं बोलते, गुड टच बोलने का मतलब तो अच्छा लगा तो गुड टच हुआ, we say safe touch unsafe touch. उसको कुछ भी कह ली, पता मकसद वही है। जी ऐसा जी भी केसेस आए हैं, ऐसे भी केसेस आए हैं कि बच्चों को एक एज तक यही नहीं पता लगता कि ये सेक्सुअल एब्यूज है हमारे साथ हो रहा है। सपोज हम्म। सपोज एक एक 7 साल की, 6 साल की बच्ची, उसको कोई भी 20 25 30 साल का आदमी कह रहा है कि आप मेरे प्राइवेट पार्ट को टच करो, उसके सामने कपड़े उतारना और उसको कह रहा है मेरे टच करो, बच्चे को पता ही नहीं है, वो टच कर रहा है, वो 1 दिन 2 दिन 4 दिन, जब तक उसको पता लगता है 6 महीने में, 4 महीने में, या कहीं से कुछ को आइडिया होता है इस बात का, तब तक वो कहते हैं ऐसा पहले क्यों नहीं रिपोर्ट किया बच्चे ने, अगर ऐसा था तो आज ही क्यों किया, इस तरह की बातें। तो कोई ऐसा टाइम फ्रेम है शर्मा जी की नो इतने टाइम नो फ्रेम के अंदर? नो 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 टाइम फ्रेम, क्रिमिनल केस में कोई टाइम फ्रेम नहीं है। अगर कोई 40 साल की लेडी ये कहती है कि व्हेन आई वाज इन 15 years और 12 years मेरे साथ ऐसा हुआ, देन इवन देन द केस कैन बी रजिस्टर्ड, हाउएवर इट इज वेरी डिफिकल्ट टू प्रूव इट द केस, बट केस कैन बी। अभी हम्म। आपने वो मी टू कैंपेन एक चला था, उसमें आपने देखा होगा कि मी टू कैंपेन के तहत बहुत सारी लेडीज, सेलिब्रिटीज ने स्पेशली बहुत सारे केसेस एंडोर्स कराए थे, रजिस्टर कराए थे। तो मेन चीज ये है कि इसमें काउंसलिंग की बहुत सख्त ज्यादा जरूरत है, खास हम्म। तौर से हमारी सोसाइटी में, जहाँ फैमिली को पहले प्रोटेक्ट किया जाता है, इंडिविजुअल को नहीं किया जाता। फैमिली को बदनामी हो जाएगी, बच्चे के साथ कुछ भी हो रहा है वो अलग बात है, फैमिली की बदनामी हो जाएगी, उसकी रेपुटेशन खराब हो जाएगी, और हम जिसके खिलाफ वो बच्चा बोल रहा है वो कौन है, ये भी बहुत बड़ा मैटर है। जी जैसा जी आपने बताया कि अंकल ने कह दिया कि मैं तो तुम्हारा सारा फूड प्रोवाइडर मैं ही, केयर टेकर मैं ही हूँ, दैट्स व्हाई आई हैव एन अथॉरिटी गिवन बाय योर पेरेंट्स कि मैं कुछ भी कर सकता हूँ। तो जी ये जो फीलिंग बच्चों में आती है, वो किसी के फादर नहीं है, अर्निंग हैंड कोई नहीं है घर, एंड मदर के कोई जानने वाले आते हैं, थोड़ा हेल्प करते हैं, और वो मदर की हेल्प करने के, फैमिली हेल्प करने के चक्कर में उस बच्चों के वहां पे जो लड़का है लड़की के साथ सेक्सुअल असॉल्ट करते हैं, तो बच्चे बोल नहीं पाते, बोलते हैं तो माँ कहती है अगर ये भी फीड भी करेगा तो हम कहाँ जाए। तो ऐसी कंडीशंस भी बहुत बार आती। तो ओके पोक्सो एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज करवाने के लिए कोई गुरेज नहीं होना चाहिए, जैसे ही किसी को पता लगता है एकदम करना चाहिए। इसमें कई प्रोविजन इसमें एक्ट में है, कंपनसेशन का प्रोविजन है, जैसे ही केस रजिस्टर होगा, केस स्टार्ट होगा, इंटरिम कंपनसेशन मिल सकता है। एंट्रीम कंपेंसेशन में जो जज ठीक समझेगा, एज पर द कंडीशन ऑफ द फैमिली ऑफ द विक्टिम, एज पर द विक्टिम कंडीशन, एज पर द ग्रेविटी ऑफ ऑफेंस कंसर्न, तो उसके तहत से उसके जो कंपनसेशन है उसको प्रोवाइड किया जाता है। बच्चे को कोर्ट तक लाने के लिए कोई अपना खर्चा नहीं करना पड़ता, उसके लिए जो वो है अपना डीएलएस से है, या जो और जो अथॉरिटी है या पुलिस वाले हैं, वो अपनी गाड़ी में प्राइवेट, मतलब यूनिफॉर्म, नॉट पुलिस यूनिफॉर्म, उसमें बच्चे को सेफली वहां तक पहुंचाएंगे जहां उसने डिपोज करना है, जहाँ स्टेटमेंट देना है, और उसको बाकायदा घर छोड़ते हैं। नंबर 2, किसी भी सूरत में पुलिस ऑफिसर के को ये ड्यूटी है एज पर लॉ कि वो विक्टिम को ऑफेंडर के साथ रूबरू नहीं कराए, उसके सामने नहीं लाए, किसी भी कंडीशन में, किसी भी स्टेज पे, भले ही वो उसका स्टेटमेंट भी हो रहा है तो वो भी बिहाइंड द कर्टन होगा, और या ऑन कैमरा होगा, तो आपस में उन दोनों को फेस टू फेस कहीं नहीं लाया जाए, ये भी एक रूल है।
तो बच्चों को डरना नहीं चाहिए। रिहेबिलिटेशन के लिए बहुत सारे सेंटर्स हैं, बहुत सारी चीजें, बहुत फैसिलिटीज इसमें दी गई हैं। उनका नाम कहीं रिवेल नहीं होता, जैसे मैंने पहले बताया, और उनको पूरा प्रोटेक्शन देने की कोशिश की जाती है। ऐसा नहीं है, गवर्नमेंट की तरफ से, लॉ की तरफ से, एज पर लॉ देयर आर वेरी स्ट्रिक्ट स्ट्रिंजेंट प्रोविजंस इन लॉ कि अगर ये चीज होती है तो इसमें इनकी सजा में रियायत भी नहीं होती। जैसे और कैदियों की थोड़ा उनमें रियायत हो जाती है, इनको पोक्सो केसेस वालों को रियायत नहीं। जी ये भी एक मैं बताना चाहूँ। थैंक मैं यू थैंक समझता हूँ कोई क्वेश्चन, जो ऑडियंस है, अगर कोई क्वेश्चन करना चाहे हाँ, तो मैं हम ज्यादा क्वेश्चंस हम बेटर। 6 बजे के बाद ओपन करेंगे। ओके ओके है ना, ओके 6:30 तक, है Ma'am, ना? उससे पहले ma'am, हाँ, यस। जी। ma'am, you had asked one thing that if if somebody has kissed someone on the lips and it is not taken as a big offense, and maybe the punishment is lesser. So there, of course, Rakesh Sharma ji has explained very well. However, I just want to add something. या प्लीज। For me, as a psychologist, the trauma that the survivor has gone through is nothing lesser had it been in some other assault. Okay, now I wanted to share one case with you. There is this girl in my school who was adopted. She got to know about this adoption much later when it came to college. I mean, when she joined college recently. Now, this child came to me when she was in class 8, saying that, ma'am, I don't know how to tell you, but I feel very uncomfortable in presence of my father. She had no idea that he was not the biological father. So I was like, what, does he hit you or anything like that? She says, no, he doesn't touch me, but he keeps looking at me in such a way that I feel I just want to run away. Okay. So then I was like, okay, I'm going to talk to your mother about it. She said, no, don't tell this to mama. And finally, there came a day when she said that, ma'am, today I saw him, I caught him. I was changing in my room and he actually was peeping through the door. I finally called the mother. The mother vehemently denied anything, saying that he is like God to us and everything. He can never do this. Anyways, I'm going to change school of my child because you are not a good influence on my child. Okay. This girl got into all wrong habits that can be associated with child sexual abuse. The repercussion, the later stage, what happens to a survivor. And I completely feel that it is because of that was an abuse. He did Yes, not touch her. and He did not. it comes under the ambit of Pocso. Yes, but it was Yes. not reported. When, ma'am, you had asked me that if it is not that if the punishment is less, was the offense less? No, the offense was as serious, as severe for the child as it can get, and the yes, child suffered. and the child suffers the same kind of trauma. Yes, yeah, the consequence, the same result. Acha, Okay, so unless it and until doesn't matter. right, Rupa. So unless until the child approaches a psychologist or a teacher or someone in the school, are you able to see some signs or symptoms in the child which indicates that the child is going through some kind of abuse? Yes, there are red flags. There are red flags. That will There are help like, the students, teachers, parents to observe their child. Please share with us. sure, ma'am. The red flags, like they can be physical red flags. They can be behavioral red flags. In physical red flags, maybe the child is finding it difficult to walk. Okay, and sitting in the class complaining of lower abdomen pain. And there are bite, bruise marks, inexplicable bruise marks all over the body. Urinating, complaining of pain while urinating, defecating. Recurrent urinary infection. These can be there as physical, and also, okay, sleep issues. If we do not take it as physical, if we bring it to behavioral, then I'll explain how. Now, evidence of physical, like I said, the bite marks and the scratches, or a love bite kind of a thing. Now, in behavioral, maybe a child has all of a sudden started withdrawing from people, from places, sits in the corner of the class, doesn't really come regularly. The grades are abnormally, going down.
The child doesn't want to go to a particular place of the school, maybe. Let's say a swimming area where the coach is there. The child says, no, I'm not going to attend his class. Or the child doesn't want to change into, let's say they have to change into their sportswear. No, I don't want to do that. Okay. Then the psychosomatic symptom may, the child can complain to the parent of a stomachache or a headache, which of course is not there, so that the child can avoid meeting the perpetrator. All of a sudden, the child can go to regressive behavior like sucking thumb or wetting bed. Maybe it's just not the age, but the child is doing it. And clinginess, like becomes very clingy to one parent or one person or a teacher, or completely avoids. And these can be, certain disturbed sleep, maybe wakes up with crying and says that I had a nightmare, very often, very recurrent. All these things can be there, ma'am. And if let's say the parent comes and complains, I don't know, उसको बहुत जब भी स्कूल आने के लिए उसको स्टमक एक होते ही रहता है, पता नहीं मैम डॉक्टर के पास ले गए, कुछ भी नहीं है. So that would be a time when the counselor should actually talk to the child. The teacher should tell the child to go and meet the counselor. Even at home, the mother says or the father says that the child is sitting with book, pen, but constantly biting nail or fidgeting or sucking the pen or sucking thumb, or says, I don't want to go to school, change my school, there is something. So all those times the parent should actually investigate कि क्या हुआ बेटा, कुछ बोलोगे, कुछ हुआ, मुझसे बात कर सकते हो. Okay. This can be. रूपा जी ने बहुत ही बढ़िया ढंग से ये बातचीत बताई है. ये सिम्टम्स जो है एक्चुअली समझ में भी नहीं आते पेरेंट्स के. सपोज एक दूसरी क्लास का बच्चा है, तीसरी क्लास का बच्चा है, उसको ट्यूशन भेज और अचानक से बच्चा कहता है 10 दिन बाद, 1 महीने बाद कि मैं ट्यूशन नहीं जाऊँ, तो रोता है जाने. पेरेंट्स शुरू में जबरदस्ती करते हैं, सोचते हैं पढ़ाई से जी चुरा रहा है, और कई बार उसको स्लैप भी करते हैं कि नहीं यू हैव टू. बच्चा फिर जाता है, फिर रोता है. पेरेंट्स गलतफहमी में रहते हैं कि ये पढ़ने से जी चुरा रहा है, इसलिए ये बच्चा रो रहा है, जबकि उसके साथ वहां कुछ असाल्ट हो रहा होता है. और जब तक ये पता लगता है असाल्ट हो रहा होता है, तब तक बहुत देर होती है. तो जैसा रूपा मैडम ने कहा कि पेरेंट्स को बहुत विजिल रहने की जरूरत है. इसमें बच्चे के जो सिम्टम्स हैं वो हर परिवार के हिसाब से अलग अलग होते हैं. जैसा पारिवारिक माहौल है, अगर उस पारिवारिक माहौल में जो दूसरे बच्चे हैं उनके बिहेवियर में और किसी एक पर्टिकुलर बच्चे के बिहेवियर में कोई चेंज आने लगी है, तो उसको बहुत भी माइन्यूटली ऑब्जर्व करने की जरूरत है. ये तो रहा बहुत छोटे बच्चों का, 12, 13, मैक्सिमम 14 साल. सबसे बड़ी दिक्कत आती है 15 से 18 साल के. व्हेन द गर्ल चाइल्ड और बॉय चाइल्ड बोथ आर वेल ग्रोन, I can say, maybe as per law they are not declared adult, but a girl of 17 years or 17.5 years know each and everything. उस केस में पेरेंट्स की जिम्मेदारी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है. सपोज एक गर्ल चाइल्ड है, वो नॉर्मल बिहेवियर से हटके बाहर स्कूल जाती है, स्कूल से आते ही अपना कमरा बंद करती है और लेट जाती है और किसी से बात नहीं करती. मम्मी या कोई घर वाले पूछते हैं व्हाट हैपेंड, तो कहते सिर में दर्द है सिंपली, या मेरे पास तबीयत ठीक है. बस ऐसा रिपीटेडली होता है, तो समझ जाना चाहिए देयर इज समथिंग गोइंग रॉन्ग विद हर, और कि कुछ गड़बड़ हो रहा है. ये ऑब्जर्वेशन जो अननेचुरल सा और अबनॉर्मल सा चेंज बिहेवियर में आने लगे, तो समझ जाना चाहिए देयर इज समथिंग गोइंग रॉन्ग. ये रेगुलर बिहेवियर से कुछ भी अगर अलग हटके हो रहा है, पेरेंट्स आइडेंटिफाई कर सकते हैं, रेड फ्लैग साइंस होते हैं. अच्छा शर्मा जी, ये बताइए मुझे, एक्ट के अनुसार अगर ऑफेंडर 18 साल से कम है, जुवेनाइल है, तो क्या चेंज होता है एक एडल्ट ऑफेंडर के और एक जुवेनाइल? उसमें मैक्सिमम सजा 3 साल की है. उसको भी अरेस्ट किया जाता है. और ये विडंबना है कि बहुत सारे ऑफेंडर्स जो हैं वो बहुत सारे केस, क्योंकि आज की डेट में जो माहौल है, जो सोसाइटी का माहौल है, जो मानसिक स्तर से जो
मैं कहूँगा जो सोशल मीडिया कह लीजिए, किसी को भी ब्लेम कर लीजिए, उसमें 17 साल का बच्चा मैं कहूँगा कि इज अ वेल परफॉर्मर, सेक्सुअली वेल परफॉर्मर। अब उसको आप कहें कि बच्चा है, तो अब लॉ तो ये है कि उसको 3 साल में छोड़ दिया जाए, जी 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 ये मजबूरी है। ऐसा निर्भया कांड में भी हुआ था। जी 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 जी, सबसे फेमस हुआ था वो कि जी, उसमें वो उसमें सबसे जो ज्यादा जुर्नैल ब्रूटल था, था वो बंदा जिसने जस वो सबसे जब ज्यादा। रोड रोड इंसर्ट किया था, बट वो जी, छूट गया। दैट तो वाज लॉ वेरी। है, लॉ है। तो ये हम्म। सब चीजें हैं, बट being the parents, being the elder one, we have the double responsibility to keep the child safe, to watch the child very minutely, our behavioral activities, our social even gathering, किन बच्चों के साथ वो रह रहा है, पहले कहाँ रहता था, पहले किसके साथ उठता बैठता था, आजकल कहाँ जा रहा है। आजकल कहीं मैं देखता हूँ 16 साल की लड़कियां लड़के हुक्का बार में जाते हैं। जब वो बार में जाते हैं तो ऐसा नहीं है कि बिल्कुल पता ना लगता हो पेरेंट्स को, तो दे शुड बी स्टॉप एट वंस, क्योंकि वहां की सेकंड स्टेप जो है वो गलत जगह जाती है, थर्ड स्टेप बहुत गलत जगह। तो ये सब चीजें हैं जो वो करती है। एक्ट अपनी जगह है, वो अपना काम करता है, वो जब ही करेगा जब मैटर रिपोर्ट हो जाएगा, और बिल्कुल रिपोर्ट बिल्कुल। होने के बाद उसके खिलाफ फिर एविडेंसेस आ जाएंगे। बहुत अच्छा। सारे केसेस एविडेंसेस नहीं हो पाते, जी। बाद में गुस्से में तो हो जाता है, लेकिन बाद में बहुत चेंज आता शर्मा जी, एविडेंस की बात आपने की है, होता क्या है कि ऐसे काम अक्सर बंद दरवाजों के पीछे होते है। जी, हैं। एविडेंस कहाँ से लाया जाए? मेडिकल बहुत सारी चीजों का हो नहीं सकता या बहुत डिले सरकम रिपोर्ट होता है। सरकमस्टेंशियल एविडेंस होते हैं, ओके। उनके ब्याह पे केस चल जाता है। ऐसा नहीं कॉर्पोरेट किया था चीजों को, एक दूसरे से कड़ी मिलाई जाती है। बच्चा कुछ कह रहा है, उसको काउंटर वहां से किया, फिर दूसरी कड़ी जोड़ी, तीसरी कड़ी जोड़ी, अगर वो कड़ियां जुड़ जाती स्टेटमेंट से, देन इट विल बी एनफ फॉर पनिशमेंट, कोई जी कर जी, सकता है। थैंक यू। इससे पहले मैं बाकी लोगों के क्वेश्चंस लेना शुरू करूं, लोग अपने क्वेश्चंस चैट में लिख सकते हैं, आई विल रीड देम। मैं आपसे जानना चाहूंगी कि होता क्या है कि हर एक्ट का, हर कानून का कोई ना कोई यूज और मिसयूज होता है। यूज के लिए बनाया जाता है, पर कहीं ना कहीं उसका मिसयूज का भी स्कोप रह यस, जाता है। ये भी क्या है, ऐसा भी देखा गया प्रैक्टिस में कि बहुत फोर्स ज्यादा केसेस बहुत आते ज्यादा हैं? बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा, स्पेशली दो तीन तरह के केसेस है। नंबर वन, जो लोअर स्टाटा है, वहाँ किराएदार मकानदार है, हम्म। मकान मालिक कह रहा है किराएदार से कि मेरा मकान खाली। ऐसे केसेस बहुत आए हैं कि किराएदार ने अपने बच्चों को यूज किया और उसके खिलाफ पॉक्सो एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज करा दिया, और उसके बाद फिर नेगोशिएशन में ये हुआ कि आप हमसे खाली नहीं कराएंगे तो हम मुकदमा वापस कर दें या बयान बदल दें। एक। नंबर दो, प्रॉपर्टी डिस्प्यूट। जहाँ प्रॉपर्टी डिस्प्यूट हो रहे हैं, वहां भी कुछ लोग ऐसी नीचता करते हैं कि वो बच्चों को यूज करते हैं दूसरी पार्टी के खिलाफ, वो भी एक हो रहा है। नंबर तीन, किसी को मेट्रोमोनल केसेस में भी ऐसा हो रहा है, कई लेडीज के थ्रू या कई जेंट्स के थ्रू, जेंट्स कम है इसमें बट लेडीज माफ करना ज्यादा है, जो अपने ही हस्बैंड के खिलाफ अपने बच्चों को यूज करके उनके खिलाफ झूठे पॉक्सो एक्ट के तहत मुकदमा जी दर्ज जी करा। जी जी। So it has to be dealt very minutely and very carefully by the judiciary also, by the society also. ये ऐसा हो रहा है, ये कम नहीं हो रहा, बहुत ज्यादा हो रहा है। चलिए, इसीलिए कन्विक्शन रेट बहुत कम। जुडिशरी के पास केस आए उससे पहले एक वकील के पास केस आता है। जी, हाउ एज अ लॉयर डू यू डिसाइड टू टेक द केस कि ये फॉल्स केस है या सही केस है, या जो मेरा क्लाइंट इट कह रहा है मेरे यस लिए वो सही है? यस इट ये थोड़ा डिपेंड्स। डिलेमा होता है, मैं यस चाहूंगी ये आप यस एक बार खुले यस मन से साझा करें कि यस यस कैसे आप करते हैं। मैं बता, पहली बात तो ये मैन टू मैन, पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है। अब मेरे पास एक केस आया, जो मैंने अभी वो डॉटर और फादर का मैंने बताया, जब उसने, मैंने डॉटर को बुलाया नेक्स्ट टाइम, उसकी मदर उसको लेके आई, उन्होंने बताया कि सब ऐसा हुआ, और मुझे लगा कि ऐसा हुआ, मैंने उसको फाइल वापस कर दिया, आई विल नॉट फाइट विद। तो जरूरी नहीं है कि सारे एडवोकेट्स ऐसा ही करें। प्रोफेशनल एथिक्स ये कहता है कि कोई भी आए, आपने अगर बचाना है तो आपने बचाना। ये अपना मैं पर्सन टू पर्सन है कि मैं ऐसे आदमी को, जो सोसाइटी के लिए मैं कहूँगा कि कैंसर है, ऐसे आदमियों को सोसाइटी में रहने का हक नहीं है, जो अपनी ही बेटी के साथ गलत कर दे, अपनी ही बहन के साथ गलत कर दे, या अपने ही किसी ऐसे बच्चे के साथ कर दे जो उस पर उसका ट्रस्ट
जिसके वो चाचा हैं, ताऊ हैं, दादा हैं, जो भी हैं, उसके साथ अगर वो गलत कर देता है, तो ऐसे सोशल एनिमल्स को सोसाइटी में ठीक से रहने का हक मैं नहीं मानता हूँ। इंडिविजुअल तौर कानून के तहत वो बच सकते हैं, लेकिन अगर एक्चुअल किया है तो यस, वकील को पता लग जाता है, काफी हद तक पता लग जाता है कि व्हाट इज द रियलिटी। अभी सुप्रीम कोर्ट के हमारे जज साहब ने अपने फेयरवेल में भी कहा था कि डिफेंस लॉयर को भी पता होता है कि रियलिटी क्या है, और कंप्लेनेंट लॉयर को भी पता होता है कि रियलिटी क्या है। केवल मैं जज जो बैठा है उसको भी पता होता है कि सच और झूठ क्या है। उसका जज का ट्रायल चलता है, जज हैज टू डिसाइड कि कौन सच्चा है कौन। जी तो जी ये रियलिटी है, इट इज द रियलिटी। और दोनों ही पक्ष हो रहे हैं, दोनों ही पक्ष हो रहे हैं इसमें। पैसा, आजकल का कल्चर, जिसमें पहले किसी लेडी का पुलिस स्टेशन जाना या कोर्ट में जाना एक बहुत बड़ा स्टिग्मा हुआ था, पूरा मतलब पंचायती लेवल पे ही निपटा लिया जाता था। आज एक फैशन बन गया, जरा सा भी ये 376 या पोक्सो 354 इज was mean was induced in the law just to protect the dignity of female, just to maintain the respect of the female, but इनका भी बहुत बुरी तरह से मिसयूज हो रहा है, बहुत बुरी तरह से। जी 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 जी, बिल्कुल सही मिसयूज कहा। और यूज दोनों होते हैं, बट इसका मतलब ये नहीं कि वो लॉ ही गलत है, लॉ गलत जी नहीं है। जी जी, इट बिल्कुल बिल्कुल। इट हैज टू बी डील्ड विद मस्ट मोस्ट केयर, क्योंकि अगर किसी को आप 20 साल की सजा या लाइफ इम्प्रिजमेंट कराने जा रहे हैं, तो उसके केस को बहुत माइन्यूटली जुडिशरी को भी देखना होता है, और एडवोकेट्स को भी देखना, और जो कंप्लेनेंट है उसको भी 10 बार सोचना चाहिए कि अगर वो झूठ कह रहा है तो क्यों ऐसा नहीं कर। जी जी जी, थैंक यू, आपने बड़ा अच्छे ब्रीफ किया। रूपा, मैं आपसे जानना चाहूंगी, स्कूल सेटअप में या कम्युनिटी में जब आपके पास कोई आता है कंप्लेन लेके, हाउ डू यू सी और हाउ डू यू मेक श्योर कि आप जो कंप्लेंट सुन रही है या जो कंप्लेन की जा रही है वो वाजिब है? कई बार ऐसा होता है कि मैंने एक प्रैक्टिस में सुना था किसी फेलो साइकोलॉजिस्ट से कि किसी 10th क्लास की लड़की को मैथ्स के सर ने अच्छे मार्क्स नहीं दिए, तो शी वेंट एंड कंप्लेन कि मुझे टच किया इनअप्रोप्रिएटली। अब कोई गवाह या सबूत होता नहीं है, तो इमीडिएटली उस मैथ्स सर को फायर कर दिया, है ना? मैं ये नहीं कहती कि सारी कंप्लेंट्स गलत होती हैं, बट कहीं ना कुछ ऐसा आता है जब आपके पास, तो व्हाट हेल्प्स यू टू सेट आउट ऑन द राइट रोड कि हाँ मैं सही डायरेक्शन में जा रही हूँ? Ma'am, when a child comes to me, my first duty is to tell the child and assure the child that I completely believe you. Yes. That has to be done, and then let the child, narrate whatever has happened. Now, when I report this to the management, and this, if at all, there is a staff or a teacher involved, then that person will be questioned and interviewed, and there I might not be there. That is also there, because my main, objective is to protect the child, to keep the child away. There was a case where the sports teacher was accused of telling the child, had you been little elder, I would have married you. Okay. Now, there was a dilemma. Does it come under Pocso? Yes. The child was very vehement that no, this is he brought down my dignity. But the teacher continued to say that I told this in front of the whole class and not in this context. My context was entirely different. However, without reporting it to the police or anybody, the teacher was asked to leave the school and join another. That's a different thing. Now, if it is actually somebody from the school who has perpetrated this crime, then of course the school will deal with it. But for me, ma'am, I will first believe the child. That no child will come just like that. I always believe that. Even if the teacher has not given full marks, I think a child will think twice before approaching and narrating an entire story. That Because their reputation is more at stake than anyone else. And being a psychologist, I can understand your viewpoint because we believe our client, whatever a client is saying is true. And I've read somewhere, either the allegation is true or there is some motive. If there is no motive, it means the allegation is true, right? Yes, I don't think a child can, fabricate such a big story. So thankfully, till now, I have not faced anything where, it was a false allegation.
in most of the cases were true. So Thank you. if someday it happens, I don't know how to deal with it really. But I'll have Okay. to believe the child first. Yes. So people have start giving their questions. एक क्वेश्चन आया है राकेश जी, आई बिलीव आप इसका आंसर कर पाएंगे कि अगर पेरेंट्स या गार्जियंस अरेस्ट होते हैं पोक्सो के अंडर, तो बच्चे की कस्टडी या बच्चे की रिहेबिलिटेशन का क्या प्रोविजन है? आप म्यूट हैं। आप म्यूट हैं अभी भी। यस, आपकी आवाज नहीं आ रही राकेश। Ma'am, what I Yeah. know is the child is immediately moved to a safe place. And for the period when the perpetrator, the father or one of the relatives is still in that custody, the child is moved to a safe place. And only after the verdict has gone, only after the person has been jailed, then the child probably can go back to the mother and start living there. I think that's how it works, but Rakesh, you will be able to tell better. राकेश जी की आवाज नहीं, राकेश जी आवाज नहीं आ पा रही है। आप चाहे तो एक बार अपना ऑडियो वीडियो चेक कर लीजिए, आप चाहे तो लॉग इन लॉग आउट करके देख लीजिए, जब तक मैं लोगों के क्वेश्चंस ले रही हूँ। स्टिल नॉट नो स्टिल नॉट कमिंग। अब आ रही है? अब बिल्कुल आई, बिल्कुल आई। चलिए मैं बिना इसके करता हूँ। जी बताइए। हाँ, अगर आपने पूछा पेरेंट्स को अरेस्ट कर लिया जाता है, पेरेंट्स या गार्जियन, प्राइम पेरेंट्स गार्जियन अगर अरेस्टेड हैं और कोई पेरेंट्स या गार्जियन नहीं है, तो बच्चे की कस्टडी का या बच्चे के रिहेबिलिटेशन के लिए क्या? यस, इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट टू रिहेबिलिटेट दैट चाइल्ड इन आइदर शेल्टर होम और एनी सेफ प्लेस, जहां भी जैसी स्टेट की जो भी व्यवस्थाएं हैं उसमें उसको रखा जाएगा। देयर आर सो मेनी होम्स, शेल्टर होम्स टाइप फॉर चाइल्ड, वहां रखा जाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट, उससे कोई कॉस्ट किसी से नहीं लिया जाएगा। ओके। एक और क्वेश्चन आया है, उसने कहा डज द ओनर्स टू प्रोवाइड द एविडेंस लाइव द विक्टिम? नहीं, दूसरी तरफ से लीजिए इसको। इसमें ऑनर्स जाता है एक्यूज के ऊपर। विक्टिम ने जो कंप्लेंट की है, विक्टिम ने कहा जी XYZ आदमी ने मेरे को ये किया। इट इज that person, the offender or the accused, who has to prove that no, I have not done, it is my proof. Yes. Okay. Complainant has not, onus उस पर नहीं जाता है कि complainant अपना प्रूव करेगा कि साहब इसने मेरे साथ ऐसा ऐसा किया। उसका कह देना ही, एलिगेशन लगा देना ही सफिशिएंट है। ये प्रूव एक्यूज को करना है कि नहीं ऐसा मैंने नहीं किया। जी। आई थिंक क्वेश्चंस बहुत लंबे लोग लिख रहे हैं, या तो हैंड्स रेज कर लीजिए और क्विकली पूछ लीजिए, या क्वेश्चंस बिल्कुल ब्रीफ में लिखिए। आई थिंक डायरेक्ट पूछ ले, अनम्यूट कर ले सब अपने को, फटाफट लोग अपने हैंड्स रेज कर सकते हैं जो भी क्वेश्चन पूछना चाहे, एंड विल अलाउ देम वन बाय वन। इट्स 6:13, वी विल कीप लास्ट 5 minutes फॉर द फीडबैक, and we have more than 10 minutes to ask questions and answer them. So in 10 minutes we can take at least 7-8 questions. So keep them brief, keep them short. अपने वीडियो ऑडियो सब ऑन कर लीजिए, 10-20 मिनट आपके पास है। जो भी ज्वाइन किए हुए, आई थिंक अपने आप को आप अनम्यूट कर सकते हो। कोई नहीं कर पा रहा तो मुझे चैट में बताओ, आस्क ऑल टू अनम्यूट। ठीक है, अब आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं, एंड यू कैन रेज योर हैंड्स सो दैट सब एक साथ बम्बार्डमेंट ना करें। यस, सौजन्या है, राधिका है, Yeah, so gentlemen, they are all let them raise their hands whomsoever asked to want to ask the question. they have switch off their video also, ना? हाँ, एक बार वीडियो भी ऑन कर लो, हम लोग ग्रुप फोटोग्राफ भी ले लेंगे, एंड इट्स मोर कन्वीनियंट जब कोई क्वेश्चन पूछता है तो सामने वाले का वीडियो और ऑडियो ऑन हो। ऑडियो भी ऑन कर लीजिए सब लोग। सौजन्या, रूपा तो है ही है। अच्छा, यस,
I think Ronita, SDA. ऑडियो ऑन करिए Yes, अपना. Sunita, you want to ask something? You unmute yourself and ask. ऑडियो ऑन कर लीजिए आप सब अपना, उसको दबाइए, ऑडियो से ऑन करिए. All are Hi, muted. hi, good evening. Yes, Yeah, good Ronita, evening. good evening. Yeah, I'm my video is a little blurred, but No, I'll it's speak. okay. It's okay. It's okay. Okay. Yes. So I posted my question on the group. I was actually my net was. Did No you problem, take my बताइए. question? Come to आप the बताइए. question, please. And with Okay. whom you want to ask? Rakesh ji or Rupa? Huh? Keep it brief. This question is for Rakesh ji. जी. So I am aware of a case right now where the perpetrator was given to the police and his phone was also submitted. The phone was full of child pornography of real kids, not like off the internet. But the face of the victim or the perpetrator is not there. Now, my question is, now the case is in the court, but does the onus to provide evidence lie with the victim being the child or the child's family? Because I feel that child pornography itself is a crime, and then this guy has been posting on Instagram with the child, hugging him and saying, "My Jaan, my heart." He's not family. He's like a groomer. He's approaches kids in the park, gives them free food, gift, and he's a typical pedophile. But how? I mean, is the onus on the victim and his family to provide the evidence? How does one work with that? राकेश जी, आपकी आवाज फिर चली गई कि आपका ईयरफोन में कुछ इशू, आप बिना उनके बात कीजिए. इस फोन से ये मैसेज आ रहे हैं, जिस फोन पर आ रहे हैं, उस फोन को आपको पुलिस को देना. दे दिया. वो जाएगा, उसके बिहाफ पे वो अरेस्ट होगा, उसके खिलाफ केस. तो इसमें क्या हो रहा है कि सारा ओनस कहीं ना कहीं विक्टिम पे ही डाला जा रहा है. सारा ओनस नहीं. देखिए, इसको ऐसे समझ लीजिए, एक्स वाई को मैसेज कर रहा. हाँ. वाई जो है कंप्लेन कर रहा पुलिस को कि साहब एक्स ने मुझे वल्गर मैसेजेस किए हैं, एमएमएस किए हैं, या जो भी. नहीं, आपस बच्चे को इतना ब्रेन वॉश कर लिया है कि आपस में चैटिंग हो रही है. हाँ, चैटिंग भी हो रही है, चैटिंग हो रही है, कोई बात. उसमें देखा जाएगा कि जो चैटिंग कर रहा है वो एडल्ट है. हाँ. बच्चा माइनर है. हाँ. तो भी उसके खिलाफ केस रजिस्टर हो. ओके. हाँ, क्योंकि एक और मैं बता दूं, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि 18 ईयर से पहले फॉर गर्ल चाइल्ड उसकी कंसेंट के कोई मायने नहीं. अगर बच्चा 18 साल से कम का गर्ल चाइल्ड है और वो उसके साथ कोई भी कुछ गड़बड़ होता है और ऑफेंडर या जो एक्यूज है वो कहता है कि मैंने इनकी कंसेंट से सब कुछ किया है, नो वैल्यू, वो रेप ही माना जाएगा, पोक्सो एक्ट के तहत क्राइम ही माना जाएगा. तो इसमें मेल चाइल्ड 13 year old, मैं बताता हूं, समझ गया व्हाट यू वांट टू से कि एक्स जो है, एक्स मीन मेल, कोई भी आदमी एक बच्चे को जो बिलो 18 इयर्स है उसको चाइल्ड या मैसेज करता है और उसको ऐसा कर दिया कि वो भी उसको लव यू या यस या रिस्पॉन्ड कर, पॉजिटिव वे में रिस्पॉन्ड कर रही है लड़की, तो भी कोई बात नहीं, तो भी केस रजिस्टर हो. ओके, थैंक यू. देखा जाएगा, उसको रियलाइज किया जाएगा किस एक्सटेंट तक किया जा रहा है, जी, क्या है एक्चुअल इंटेंशंस उसकी क्या रही है मैसेज में और उसकी क्या रही. जी, यस, बट इज अ क्राइम. गुड क्वेश्चन. 18 ईयर्स से कम बच्चे के साथ कुछ भी करना इस तरह का, वो क्राइम किसी भी रूप. सो शर्मा जी, आपने कहा कि 18 ईयर से कम गर्ल चाइल्ड की कंसेंट नहीं मानी जाएगी, लेकिन बॉयज के केस में इज इट 18 और इज इट 16 और 18 सेम. ओके. थोड़ा सा सजा में कम है. 16 से 18 साल के साथ अगर कुछ होता है तो सजा थोड़ी कम है. 16 से नीचे होता है 12 तक कुछ ज्यादा है, और 12 से नीचे होता है बहुत ज्यादा. जी. Yes. Anyone else who want to ask the questions, please raise your hand. And if you want to write down, it's okay, but raising a hand and asking is much easier. Yes, Sojanya. संगीता है, संगीता शायद है, वो चाय में बिजी है. चाय में. Yeah. Good evening, sir. Sojanya, yes. Please ask your question. Yeah, sir. If both the perpetrator and the victim are both are minors, हाँ. then Yes. what do we do? In that You can case? make complaint. He will be arrested.
Both He of will them be will be arrested, but arrested? it is another matter. He will left out within 3 years, after 3 years. Maximum Both of- punishment for juvenile is 3 years. Sir, both will be arrested or only No, the no, boy no, no, will no, be arrested? no, 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 no. Only offender. If this is a Only the male or offender. Okay. female, the girl child will not be arrested. Boy child will be arrested. But if the girl has seduced the boy, then? Then the boy will complain. Then the Acha, girl okay. will be arrested. Yeah. Yes, yes. Okay, sir. Okay. Thank you, It's sir. vice versa. Law is gender neutral. Okay, sir. G. Yes. Who would like to ask the next question? Yes, Sandhya. Please unmute yourself and ask. Yeah, ma'am, what I wanted to know was, they have so many programs in school and all, right, in which teachers and children are participating. So sometimes, the touch happens and it is mistook or it is read in a different way, but the adult gets punished. So what happens in that case? I mean, the evidence provided by the child is taken as the truth because while practicing or whatever, because I know of a case when the teacher said, like, it was during practice it happened, but he was sent to jail for having committed the crime. What do you exactly want to know, Sandhya? So, I mean, how do you protect an adult also in such things? Because the case is so much loaded against the victim, against the perpetrator or so-called perpetrator, which is not a real perpetrator. What evidence, Okay, like, yes, that's we had discussed earlier. There are so many false cases also reported by through the minors, by their guardians, some parents or some friends or some, just to vanish the reputation or just to give the lesson to some person. It is proved in the court. It has to be proved in the court. It has to be proved. But the onus Many- lies on the person जिस पे इल्जाम रखा गया है, the offender, right? जी रहेगा तो उसी ओनस तो उसी के ऊपर है, लेकिन वो किसी भी वकील को ढंग से बताएगा और एडवोकेट उसका ठीक से करेगा तो इट विल बी फ्री. Okay, thank you. There is one more hand on Pratima Birani. Can I request जो भी questions पूछ रहा है, they come on camera. It becomes more convenient. Thank you. Good evening. Good evening, evening. everyone. Good evening. Unfortunately, I have joined a little late because of some technical issues this side. Maybe you have covered my question. I just want to know, is there any time period constraint of lodging a complaint? No, not at all. It can happen after After n number years, of months, after years, n number of years. Yes. Okay. Yes. Okay. But And it should be, suppose, but it should be justified. There will be a question from the defense lawyer. Why you made a complaint so late? Why the delay? It is called justified delay. Maybe fear, maybe not awareness about the crime, what happened with me. If a child of 6 years and the offender had done something wrong with the child who was 6 years, and he or she doesn't know what happens with me, then after 4 years or 3 years, he came to know, oh, that assault was sexual assault. Then he reports or she reports. Then the case can be registered and he will be convicted. okay, as my second question is about, like, if something has happened, some unfortunate incident of this type has happened in your neighborhood, and the victim has confided in you and told you about the scenario, and should we go to the RWA first and then go to lodge a complaint? Is there a proper procedure? Should the RWA be part of the complaint or not? Will it play more weightage? It's not necessary. It's not necessary. Anybody can go to the police station direct. But if or she or he doesn't know the location of police station or how to go there, and there's no meaning of transport, especially in the rural areas where the police station are so far, villages are so small, and a victim cannot go by herself, then she can take help from anyone.
either by the RWA or either by the Pradhan or Sarpanch or anyone. But Okay. she or he can get nowadays the phone are available. They can simply or she can simply phone to the police. Police will come at her residence and lodge the complaint. Okay. Any number which can be like they can make an anonymous call, or with instead of appearing in the police station and lodging a complaint, can they call up a police help and they can visit and take a complaint if the victim No. is not from a very well-to-do background? Suppose I'm talking in terms of our maids and helps and all. Something has happened I'm like saying that. the same. I am saying the same. If any victim wants to lodge a complaint by phone, she can make a call to the police that it has been happened with me. I am residing here. This is my address. Then policeman will come without clothes, without uniform, and take the statement of the victim. And on the basis of that statement, the police officer has to register an FIR against the offender, and the case will start. Okay. Thank you so much. Thank you. I'm enlightened. Thank you. Good. Okay. Thank you, Tima. Veera, you want to ask a question? Veera, She's there. She has raised the hand. yes, Veera hai, Pratima hai again. Yes, Anybody yes. I ask? want to ask a question. Okay, Yeah. if the child is assaulted and that child is a special child, a child with needs, Yeah, so how yeah. are Very we good going question. to help? Yes. And what is the role of the psychologist here? Yes, And yes. how actually we should educate the child and also the parents, because even the parents will be involved here. So Okay. how are we going to help Yes, in this case? yes. If a girl child is mentally upset or mentally retarded or special child or handicapped or any, you can say not perfect, wants to lodge a complaint, then police is it mandatory for the police to take the assistance of some psychologist or some doctor or some the specialist of that type of disease, and then lodge the complaint. Or lodge the complaint means lodge the state. Yes. Okay. And should we also involve the parents, because parents need to be aware, because many a time the child can't express, right? When it is with needs, the child is unable to express. So how are we going to educate the parents that what signs, symptoms, there should be some workshops taken for such parents or Yes, something in the schools? just before we have discussed all about this, Yes. for the awareness campaign in all walks of society, all levels, it should be, yes. Yes, Veera, we have covered this and we just have 2 minutes. I would request anyone who would like to share their feedback and how did they find the session, what all they learned today, and Ma'am, if they can want something to improve. Yeah, Rupa, please. Yes. Ma'am, Straight away. can I just the question. answer Veera? Veera Yeah, had please, asked please, about, please. Veera, it was about children with special needs, right? Yeah, right. So in that case, special educators are there in school. Let's say the child can go to school if the child is with ASD, ADD, or AMR. So according to the level of understanding comprehension of that child, the special educator will explain the safety rules. And of course, we always encourage the parents to attend such sessions so that they can also, parents are the caregivers, so that they can also, educate the child at home. Now, if the child has ASD along with speech impairment, then it becomes an issue for the child to report. What happens in that case? Play acting, role playing, or drawing, or just imitating in front of the child. That let's say I am going and another person comes and gropes me, and how I retort, how I respond, and all these things, acting it out in front of the child for the child to understand. Basically, each one will have different understanding level. So we'll have to customize it to that child's level. But the special educator must do it.
Thank you, Rupa. Thank you for answering this. This was really very important because the special child or the parents may not be aware how to understand what the child is trying to say if in case the retardation is to that level. For I'll request example, everyone. for example, मैं बता रहा हूँ, suppose कोई बच्ची गूंगी है, गूंगी बहरी है, और वो पढ़ी लिखी भी नहीं, she can't write anything about the complaint and बोल भी नहीं सकती, तो उसके लिए जो गूंगे बहरों के जो स्पेशल टीचर्स होते हैं, जो मास्टर्स होते हैं, उनको बुलाया जाता है और उनके एक्सप्रेशन से they will narrate the story and then the case will be raised. ऐसा हो जी. कोई ब्लाइंड है, ब्लाइंड भी हो सकते हैं, उन्होंने देखा नहीं है किसी को, बट ब्लाइंड है, बट इवन दो द केस कैन बी रजिस्टर्ड. तो आपका कहना है कि हर तरह के जो भी फैसिलिटेटर्स की जरूरत होगी, यस, वो पुलिस की ड्यूटी है. यस, पुलिस की. They will be made available. Yes. Okay. Before we conclude, I would request everyone to come online. We can have a group picture. Thank you. I expect more people to come online. Everyone, please once come online so that we can click a group picture. And by the time people are coming online and I'm taking pictures, I would like to say thank you to both the experts, Rakesh Sharma ji and Rupa Pillai. They both have expressed and shared a lot of knowledge. बहुत कुछ आज जानने सीखने को मिला. सिर्फ सुना था पोक्सो एक्ट है, बट इतनी डिटेल में जानकारी कि क्या उसका प्रोविजन है, कैसे कंप्लेंट होती है, क्या छोटे छोटे माइनर डिफरेंस है, माइनर है तो, and lot many things from the psychologist point of view were shared by Rupa. I'm indeed thankful to both of them and everyone who has joined for sparing their time. So if you want to share some feedback, I can spare 2 to 3 minutes because by 6:35 we need to close this link. And yeah, Sangeeta. Yes. Yeah, you are unmuted. You Yes. muted me. Yeah, I would like to say thank you so much to Rakesh Sharma ji and to Rupa Pillai ma'am. It was a wonderful session. I thoroughly enjoyed it and it was very informative, loaded with on research base as well. Like, you are the special professional people. It's not like, coming from the street boy or so. Thank you so much. Thank you. Thank you. Thank you. Anyone else want to share the feedback? We have just 2 more minutes. Yeah, Amrita, please. Hi, I also wanted to just say that very, very informative. And Mr. Sharma, Ms. Pillai and Ms. Kadian, the level of information you shared is very good. I just hope we can get this to all the grassroots level so that people are aware, because this is so, I wasn't aware, being somebody who's educated and everything, I wasn't aware of this until recently, about the act and how it's useful. So thank you so much. And I just hope that it reaches more and more people. It's good. And one thing I want to share and offer my services. If any incident like this happened in your knowledge, then you can call me anytime if the victim is not able to raise the voice or cannot do the needful whatsoever needed without due to lacks of knowledge or some resources. Right. Then me and my team doing this job free of cost at any time. Everybody is welcome to call me at any time. 24 hours, my numbers are open. Thank you so much. I will take you up on this. You can take my number from the great offer admin. for all our participants. I'll share his number with the participants. Okay. Right? Thank you so much. Yes. Anytime, 24 hours. Delhi and NCR and all that, any state, we will provide the legal aid free of cost. Thank you so much. So more cameras are coming, or should we close the link? One more minute. Ma'am, Yeah. before you close the link,
And Yeah, can yeah. I just say that we'll not call the people who have gone through this experience as victims, they are survivors. Yes, Because they are Yes, survivors. this, yes. In Thank you for this, correcting, Rupa. Thank you for it is correcting. called survivors. because Yes. this incident is not the only thing in their lives, right? They're more than this. So because Yes. I am one of them and I call myself a survivor. Yeah, great, great. Thank you for correcting this, Rupa. And Not he's none. a brave person who have been helping so many other survivors to come out of this thing. And I request you, ma'am, please do this type of webinars, very short, in very short intervals, हम आपको so तंग that करते रहेंगे. public at large can be benefited and some awareness through this type of webinars can be spread in society, and someone may be benefited by this बिल्कुल. effort. ये अवेयरनेस आता है, अब तक जिसको पता नहीं होगा वो देखना, यहाँ से कुछ लोग तो ऐसे जरूर होंगे जो जान के जाएंगे कि हाँ ये किया जा सकता है. मैं आपका It is नंबर happening day by day. It is happening day to day in all walks of life, all walks of society. हर स्टेज पे हो रहा है, बट कहीं कोई चुप है, कोई चुप कराया जा रहा है, कोई बोल नहीं पा रहा है, ये अलग बात, बट हो रहा है. सारे पार्टिसिपेंट्स के लिए मैंने राकेश शर्मा जी का नंबर शेयर किया है. एनीवन हु वांट्स टू बेनिफिट फ्रॉम देयर लीगल सर्विसेज व्हिच दे आर ऑफरिंग फ्री ऑफ कॉस्ट फॉर एनीवन फाइलिंग अ केस अंडर पोक्सो एक्ट, राइट? कैन Pocso 376 और 354, नो प्रॉब्लम. नहीं, आप बाकी केसेस तो आप पैसे लेके लड़ते होंगे तो नहीं, अच्छा, this 354 भी सेम मिलता जुलता ही है, वो सब हुआ मोसी के ऑफेंस है. तो 376 में 18 प्लस कोई 18 प्लस 1 मंथ हो गया तो उसको 376 में कन्वर्ट कर दे. ओके ओके ओके. तो अगर कोई ऐसा सर्वाइवर है जिसको लगता है कि हमारी जरूरत है, फ्री ऑफ कॉस्ट उसको लीगल एड दें. हमारा ऑफर आपके चैनल से ही है. ये तो बहुत बहुत महान काम है शर्मा जी. हम आपके तहे दिल से शुक्रिया करते हैं इस सर्विस के लिए. स्पेशली आपने जो इन्फॉर्मेशन दी उसके लिए धन्यवाद. एंड रूपा मैम जो आपने शेयर किया स्कूल सेटअप में जो आप काम कर रही हैं बच्चों के लिए, कम्युनिटी में और सर्वाइवर्स के लिए, उसके लिए मैं चाहूंगी सब लोग एक बार जोरदार तालियां दोनों राकेश शर्मा जी और रूपा पिल्ले मैम के लिए. एंड थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस. यू आर रियली गुड ऑडियंस. स्पेस कंस्ट्रेंट है because we need to close the link. Another meeting needs to be started on this link. So thank you so much for joining. Thank you all. Thank you all. Thank you, sir. Thank you, Thank you. Rakesh, sir. Thank you so much. Thank you everyone.